Hello students, as I have told you, the addition, subtraction, multiplication, division of two complex numbers. Now I am going to solve the exercise 5.1. First question is multiplication. 5 iota, the name remind that the name of this symbol is iota. Okay, so 5 iota multiply 3 upon 5 iota. When we multiply it, so 5 multiply 3 upon 5 into iota, that is iota square. 5 and 5 will be cut, we get 3 iota square. As I have told you, the value of iota square is minus 1. Okay, so we can put up the value here, iota square is equal to minus 1, we get minus 3. Okay, समझ में आया? Okay. Now second question is addition. So one thing is important here, if the power of the iota is odd numbers, then firstly make it the even number. Okay, as here कि iota to the power 9, तो we can write it in iota into iota to the power 8. क्यों हमने ऐसा किया? अभी आपको बताया कि यदि ऑड है तो उसे हम इवन बनाएंगे. अब इवन क्यों बनाएंगे, जस्ट आई विल टेल यू. तो ये 8 हो गया. नाउ हियर 19, तो आयोटा इंटू आयोटा टू द पावर 18 लिख सकते हैं. 18 और 1 19. ओके, नाउ इवन इसलिए बनाते हैं कि इवन स्क्वायर का पावर कुछ भी कर सकते. जैसे 8 है तो हमें लिखना है आयोटा स्क्वायर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1. तो हमें यहाँ लिखना है आयोटा स्क्वायर और इसके बाद पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे यहाँ 8 है तो आयोटा स्क्वायर 2 4 जा 8, तो आयोटा स्क्वायर टू द पावर 4. यहाँ 18 है तो आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9, 9 2 जा 18. नाउ पुट अप द वैल्यू हियर कि आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, तो -1 टू द पावर 4 प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो -1 टू द पावर 9. अब आपको पता है कि यदि 1 निगेटिव है तो यदि उसका पावर इवन नंबर है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑड नंबर है तो वैल्यू निगेटिव होगी. जैसे -1 का स्क्वायर +1, क्यूब -1, टू द पावर 4 +1, टू द पावर 5 -1. यानी व्हेन द पावर विल बी इवन नंबर देन द वैल्यू पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव. तो यहाँ पावर इवन है तो वैल्यू हो जाएगी 1, प्लस आयोटा इंटू यहाँ पावर ऑड है तो ये हो जाएगा -1. तो आयोटा इंटू 1 आयोटा और आयोटा इंटू -1 इक्वल टू, हियर विल बी इंटू, तो इट विल बी माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 0. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोटा टू द पावर -39. तो पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 39. अब 39 ऑड नंबर है तो पहले इसको इवन बनाएंगे, तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा टू द पावर 38. अब 38 क्या होता है, 19 टू द पावर 2, यानी 19 टू 38. तो वी विल राइट हियर आयोटा स्क्वायर टू द पावर 19. नाउ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 और -1 का पावर 19 करेंगे तो ये ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा इंटू -1. तो आयोटा इंटू -1 इट विल बी माइनस आयोटा. अब इसको माइनस आयोटा को हटाने के लिए माइनस आयोटा से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें लाइक रेशनलाइजेशन, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो ऊपर हो गया माइनस आयोटा, अपर नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर. अगेन वी पुट अप द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल, वैल्यू विल बी आयोटा. ओके, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is 3 into 7 plus iota 7 or 7 iota, both is same, plus iota into 7 plus iota 7. So here is plus, so firstly we open the bracket, 3 7 ja 21 plus 3 7 ja 21 iota plus iota into 7 7 iota or iota 7, both you can write, don't be confused here. Okay,
and iota into iota, iota square into 7. Now 21 plus 21 iota plus 7 iota, it will be 28 iota. And here the value of iota square is -1 into 7. So we get 21 plus 28 iota minus 7. Up 21 and minus 7 is real part. It can be added. So 21 minus 7 is equal to 14 plus iota 28 or 14 plus 28 iota, both you can write. आप आयोटा को नंबर के पहले भी लगा सकते हैं, नंबर के बाद भी लगा सकते हैं. डोंट बी कंफ्यूज इन दिस. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6. तो व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, हियर इज माइनस, तो 1 माइनस आयोटा प्लस 1, फिर प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा. तो 1 plus 1, it becomes 2, and minus iota minus 6 iota, it become minus 7 iota. Okay. Now question number 6 is, see carefully here. If here positive or negative, then we open the bracket. If here is multiply, then we follow the multiplication rule. Okay. So here is minus, so firstly open the bracket. It's become negative, it will be also negative. Now 1 upon 5 and minus 4 is real part. तो रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे. एंड आयोटा 2 upon 5 माइनस आयोटा 5.2 इज इमेजिनरी पार्ट. तो इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे. तो हियर वी टेक एलसीएम. 1 माइनस 5 4 जो 20, 1 माइनस 20 upon 5 प्लस 4 माइनस 25 अपॉन 10, इसका एलसीएम लेंगे तो वी गेट हियर इनटू आयोटा. तो माइनस 19 अपॉन 5 माइनस 21 अपॉन 10 आयोटा, इट विल बी आंसर. दिस इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is, see carefully, this question is given in the book. Symbol here is plus and here is minus. So firstly we will solve this bracket and open the bracket. Sign is plus here, their sign will not be changed. So real part will be added together and imaginary part will be added together. So we get, after taking LCM, this one is 13 upon 3 plus 8 upon 3 iota plus 4 upon 3 iota minus iota. Okay. Again, this one and this one is real part, so it will be added together. And this one and this one is imaginary part, so it will be added together. We get, after adding 17 upon 3 plus 8 minus after taking LCM 3 iota, the iota is common here. So 8 minus 3 upon 3, we get 5.3 iota. This is the answer of this question. Okay. This answer is in complex number. This is in complex form. Okay. Now question number 8 is 1 minus iota to the power 4. So iota to the power 4, we can write it 1 minus iota square into 1 minus iota square. That's right. Okay. Now here we use the formula of a minus b whole square. Then a square plus b square minus 2ab means square of 1 is 1, square of iota is iota square minus 2 into 1 into iota. We get this one. And same in second bracket also. Now you know that the value of iota square is minus 1. So 1, the value of iota square is minus 1, minus 2 iota. Same here also. Now plus 1 and minus 1 will be cancelled here. We get minus 2 iota into minus 2 iota. That is minus minus plus 4 iota square. Now the value of iota square is minus 1. We get minus 4. Okay. This is the answer. Now question number 9 is
1 upon 3 plus 3 iota cube. Here we use the formula of a plus b whole cube. So you know the formula, a cube plus b cube plus 3a into b into a plus b. So after getting the value of a and b here, we get 1 upon 27 plus 27 iota cube plus 3 iota into 1 upon 3 plus 3 iota. After open the bracket this one, we get iota plus 9 iota square. Now the value of iota cube is minus iota. Why? The iota cube means minus iota square into iota, and the value of iota square is minus 1 into iota, that is minus iota. So 1 upon 27 minus 27 iota, this one plus iota minus iota square of value of iota square is minus 1, it will be minus 9. Then 1 upon 27 and minus 9 is real part and this one is imaginary part. The real part will be added together, we get 242 upon 27, and imaginary part together, to minus 27 plus 1, we get minus 26 iota. This will be answer of this question. Okay, thank you. Hello students, now question number 11. Find the multiplicative inverse of each of the complex number given in question number 11 to 13. Means find the multiplicative inverse. So you know that the multiplicative inverse of 4 is 1 upon 4. That is clear. The multiplicative inverse of 4 is 1 upon 4. So here complex number is 4 minus 3 iota. So the multiplicative inverse will be 1 upon 4 minus 3 iota. That's clear. Now already you have to remember in class 9th for the rationalization, if sign is here positive then we multiply by negative, and negative then we get multiply by positive. So here sign is negative, so we multiply it by positive numerator, both numerator and denominator. The numerator will be 1 multiply 4 plus 3 iota, we get 4 plus 3 iota, and denominator will be a minus b into a plus b, that is a square minus b square. That's clear. Now next point is 4 plus 3 iota upon square of 4 is 16 minus square of 3 iota is 9 iota square. Now the value of iota square is minus 1. You have to keep in your mind where this is iota square, you have to put up value is minus 1. Then you get minus 9 multiply minus 1, we get plus 9. After that 4 plus 3 iota upon 25. This is the answer. But if you want to write the terms separately, real part and imaginary part, then we get 4 upon 25 plus 3 upon 25 iota. Okay. Next question number 12 is same. Under root 5 plus 3 iota. The multiplicative inverse of this one is 1 upon under root 5 plus 3 iota. Here sign is positive, then we multiply by negative sign both numerator and denominator. We get under root 5 minus 3 iota upon, we put up the formula a square minus b square. We get square of under root 5 is 5 and square of 3 iota square is 9 iota square. Again put up the value of iota square is minus 1, then we get here this is 3 iota, this one is 3. Okay, now we get 5 plus 9, so that is 14. When we write the term separately, then we get under root 5 upon 14 minus 3 upon 14 iota. You can leave this answer also, but if you want to write the real terms and imaginary terms separately, then you will write this statement. Okay, thank you. Hello students, now last question of this exercise, question number 14 is 3 plus iota root 5 into 3 minus iota root 5 upon 3 plus iota root 2 minus 3 minus root 2 iota.
Okay, now see carefully, here sign is multiplication and here sign is negative. So in numerator term is same, a plus b into a minus b. So we put up the formula a square minus b square, and denominator here symbol is negative. So when we open the bracket, sign will be changed of this bracket. So we get root 3 plus root 2 iota. So plus root 3 and minus root 3 will be cancelled. And here we get 9 minus 5 iota square upon 2 root 2 iota. Now the value of iota square is minus 1. Then we get 9 plus 5 upon 2 root 2 iota. Now by the rationalization we multiply by root 2 iota both numerator and denominator. We get 14 root 2 iota upon 2, and when we multiply root 2 into root 2 we get 2 iota square. It will be 14 root 2 iota upon 4 multiply the value of iota square is minus 1. We get 14 root 2 iota upon 4. When we simplified it or in standard form, we get minus 7 root 2 iota upon 2. This is the answer. But if the question is saying that ki write in the form of complex number, so there is no real part in this question answer. Therefore you can put up 0 for real part. 0 means nothing. So you can write here 0 part is none here. You can write as real part is no here ना. इसमें रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट के प्लेस पे आप 0 पुटअप कर सकते हैं. यू कैन पुटअप 0 एट द प्लेस ऑफ रियल पार्ट. तो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट. आंसर विल बी दिस वन, और यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.